Voting is underway for the first phase of the Bengal Assembly election. 152 seats across 16 districts going to the polls under tight security. At the booth where I am in the Baharampur Assembly constituency, I can see CRPF personnel who are here to provide security to this booth. All of these people, of course, streaming in to cast their vote. I first like to talk about the larger context of the elections before I come to Baharampur. Like I said, 152 seats going to the polls today. Now, they start from North Bengal, which would be Siliguri, Darjeeling, come all the way here to Murshidabad, Malda, where SIR is a big factor, and then go down all the way to Nandigram, where there is a big battle between Shuvendu Adhikari of the BJP and his one-time aide, Pavitra Kaur, of the TMC. There have been multiple issues, political ones, raised all through the campaign on this side. In the northern part, which is Siliguri, Darjeeling, and those parts, the BJP has been a dominant presence in the last some time, and they will look to consolidate those gains that they have made in those parts in this election also. But overall, if you look at the overarching number of the kind of contest that was in 2021 on these seats, the TMC was the victor on the larger number of seats, which is obvious because they formed the government. But this time also, many factors into play, including the SIR, like I said, for instance, in Murshidabad and Malda. I'm in Murshidabad district right now. SIR has been a big factor. Murshidabad, in fact, has been the district that has seen the largest number of deletions when it comes to SIR, to SIR lists after the adjudication process. Now, that's something which one wonders how it will play out in the vote here. What it means in simple terms is that there are many people here in Murshidabad, in Malda, and these districts who will not be voting this time around because their appeals are still pending. Now, all of these factors are in play, but the voting process is underway. And like I said, it's strict security. I'd like Nirmal to also show you some security shots. CRPF personnel and the Bengal police manning these booths. There is a large number of security personnel from the central pool present in Bengal right now. Over 2,400 companies, which means that in terms of boots on ground, it means at least 20 lakh or more security personnel. That's a big, big number. And the Election Commission says that their aim, their objective is to ensure a free and fair polling process. And that's why they have all of these security personnel here manning these booths. And actually, you can also see CCTV cameras here, which is something that the Election Commission said they will implement across booths just to keep an eye on the proceedings. All of this is happening here. So many people out here early in the morning. Ma'am, what's your name? आपका नाम क्या है? বাণী বিশ্বাস। बानी जी, so early in the morning, इतनी सुबह सुबह आप आ गई? হ্যাঁ, अच्छा। কারণ আমি থাকি ওল্ড এজ হোমে, ওই জন্য তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। অনেক দূরে থাকি, हाँ हाँ, কাশিম বাজার, ওখান থেকে এসেছি। मतलब काफी दूर से आई हैं। কাফি দূর से মানে টোটো রিজার্ভ করে এসেছি। अच्छा अच्छा, तो ये बोलिए मैम, किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा, बट आप लोग के लिए सबसे बड़ा इश्यूज क्या है इस इलेक्शन में? व्हाट इज द बिग इशू फॉर यू? विदाउट कोई पार्टी का नाम नहीं लीजिएगा, बट सबसे बड़ा इशू क्या है आपके लिए इस इलेक्शन? দেখবো যিনি ভালো হয় আর কি, সেরকম ঠিক ইয়ে করে দেবো আর কি ভোটটা, সেরকম জায়গায়। जी, হ্যাঁ, যাতে ভালো হয় আর কি। व्हाट्स योर नेम मैम? आपका नाम? सुदीप्ता सरकार। वेयर आर यू फ्रॉम? आप यहीं से हैं? यहीं से हो। यहीं से। अर्ली इन द मॉर्निंग यू आल्सो कम टू वर्क? हाँ, भीड़ ज्यादा हो जाता है, झमेला बहुत होता है इसके बाद आने से। जितना सुबह सुबह आ सकते हैं, इतना झमेला मुक्त हो सकता है। बिना किसी पार्टी वार्टी के नाम लिए, आपके लिए एज ए यंगस्टर क्या बड़ा इश्यू है इस इलेक्शन में? मेरा इशू यहाँ पे एक ही है, बारिश, थोड़ी सी बारिश होता है तो सबके घर में पानी घुस जाता है। ये इतना बड़ा इशू, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। इतना हमने इतना म्यूनिसिपलिटी को इतना कुछ बोला है, लेकिन कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। कभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी अगर बारिश होता है तो सबके घर में पूरा पानी भर जाता है। एकदम पूरा दिन हम लोग ट्रैवल। इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ही एक लोकल इशू का बात कर रही हैं, लेकिन जो कैंपेन्स होते हैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या बात होता है। ये सब बात तुम सुनते? बहरमपुर में ऐसा ही है। अच्छा। सिर्फ हमारे लोकल में, हमारे वहाँ पे होता है ऐसा नहीं, पूरा लोकल, पूरा बहरमपुर में ऐसा है। अगर थोड़ा वीडियो आप देखेंगे तो आप भी देखेंगे, खुद हमारा जो म्यूनिसिपलिटी का जो पौरपति है वो पानी निकल रहा है। तो पॉलिटिशियंस ने सबका बात भी किया है कैंपेन में? बात करते हैं लेकिन सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम। सॉल्व नहीं होता अल्टीमेटली। These ladies here are among the first people who've cast their vote. मैम, आपका नाम क्या? What's your name? मीरा रानी आइज। आपका? कृष्णा आचार्य। एकदम मैंने देखा सुबह सुबह आप लोग आके वोट कास्ट कर दिया। मतलब कोई वो सोच के आया कि ऐसे ही सुबह आ गए आप लोग?
মানে বাংলায় বলুন। গরমকাল তো মানে ভীষণ গরম লাগবে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, সামার সিজন। হ্যাঁ। বাড়িতে আজ বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পুজো আছে, হ্যাঁ। সেই জন্য তাড়াতাড়ি চলেছি। ভোট দেওয়াটাও একটা জরুরি। হুম। সবকিছু মিলেমিশে আমরা সকাল সকাল চলে এসেছি। জি ম্যাম, আপনি একই ব্যাপার, আমি হিন্দি বুঝি না একদম। তুমি বাংলা বলুন, বাংলা বলুন। সকাল সকাল দেওয়া মানে রোদের তাপ তো, ভীষণ হ্যাঁ। রোদের তাপ, ওই জন্য আসা অসুবিধা। আর বাড়িতেও তো মেয়েদের কাজ, হ্যাঁ, ওই জন্য সকাল সকাল আর চলে ভোট এসেছি। দেওয়াটা আমাদের আর একটা ভোট প্রায়োরিটি। দেওয়াটা- प्रायोरिटी। হ্যাঁ। एक चीज बोलिए मैम, बिना किसी पार्टी का नाम लिए, कोई पार्टी का नाम मत लीजिए, बट तुम्हारे काছে কি ইস্যুটা কি ইলেকশন এ মেন ইস্যুটা কি? মেন ইস্যুটা মানে আমাদের কি বলবো, ভালোভাবে মানে চলে, যাতে আমাদের সরকার যাতে ভালোভাবে সবকিছু চালায়। এই এত খুন খারাপি হ্যান ত্যান এইসব আমরা চাই না। চাই না। আপনার কি ইস্যু কি? একই ব্যাপার, হ্যাঁ, একই আমরা ব্যাপার। শান্তিপূর্ণ চাই, শান্তিপূর্ণ। ভালোভাবে চলে, হ্যাঁ, তাই তো। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে মানে থাকতে চাই, এটাই আমাদের এইটাই, issue। আর কিছুই না। জি, Thank you. Thank you. So there you have it, people coming in bright and early to cast their vote, and it feels nice to see so many people coming in and being able to come here, exercise their right to vote. Of course, like I said, there are others who will not be able to vote in this election because their appeals before tribunals are still pending. From the figure that we have, about 136 names have been cleared of those tribunals. Of the lakhs of appeals that are pending now, that obviously is a very minor figure, which means that while there are lines here and while there are people here who will be able to cast their vote, there are also others who perhaps will not be able to. And that's something that's been a mark on this election, and one waits to see how this will pan out eventually and also politically for the parties that are in the fray. But yes, many people coming here amid tight security to cast their vote.